नमस्ते। आइए आज हम अपनी कविता के दूसरी कविता की बात करें. Today we are going to talk about the second poem in our selection. The title of this poem is Echo. E-C-H-O. What does it tell you? Think about it for a bit, and then we shall talk about this poem Echo. It has been written by Walter de la Mare, and the poet Walter was born in Charlton, Kent, England in 1873, and he passed away in 1956. He wrote many poems, kavitaएं, novels, उपन्यास, essays, निबंध, etc. His anthology का माने कविताओं का संग्रह, for children called Come Hither, which he wrote in 1923, became very, very popular. Let us go to the poem now. First, we are going to read the poem 2 times and then we'll talk about it. What does the word echo remind you of? It reminds me of a visit to a tunnel, surang mein jana, or a visit to a structure with a very high dome. Dome का मतलब गुंबद, गुंबज वाला मकबरा है, जैसे कि हौस खास में मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है. तो कोई ऐसी बड़ी इमारत जिसमें कि खूब बड़ा गुंबज हो और आप खूब ज़ोर से कुछ चिल्लाइए. When you shout into it, then your voice comes back to you, right? ये गूंजती हुई आवाज़ को echo कहते हैं. And you explain it scientifically as to how sound waves travel and come back to you. Once they hit a solid surface, maybe a wall or mountains. Have you had an echo experience before? If not, let's talk about it now. This short poem has just 16 lines. So I shall read the poem first and then we will explain line by line. We will have 4 different sets of lines. Who called? I said, and the words through the whispering glades, hither, thither, baffled the birds. Who called? Who called? The leafy boughs on high hissed on the sun. The dark air carried my cry faintingly on. Eyes in the green, in the shade, in the motionless break, voices that said that I said for mockery's sake. Who cares? I bawled through my tears. The wind fell low in the silence. Who cares? Who cares? Wailed to and fro. Let's read it one more time. Who called? I said, and the words through the whispering glades. Hither, thither, baffled the birds. Who called? Who called? The leafy boughs on high hissed on the sun. The dark air carried my cry faintingly on. Eyes in the green, in the shade, in the motionless break. Voices that said that I said for mockery's sake. Who cares? I bawled through my tears. The wind fell low in the silence. Who cares? Who cares? Wailed to and fro. Now we're going to just take the first 4 lines. Who called? I said, and the words through the whispering glades. Hither, thither, baffled the birds. Who called? Who called? The poet says that the words who called loudly. These words traveled through the whispering glades. Whispering glades are
ओपन स्पेसेस इन द फॉरेस्ट, जंगल में खुली जगह जहाँ पेड़ ना हो। और यहाँ कवि कल्पना करता है कि these glades, open spaces, they have the quality of whispering, फुसफुसाना। धीरे से अगर कोई कुछ आप अपने किसी और साथी से कुछ कह रहे हों तो मानो इस तरह से whispering glades were there. These words travel through the whispering glades. Where did the words travel? Hither, thither. That means here and there. And this hither, thither, that is here and there travel of sound, who called, seems to have baffled. Baffled, that means confused the birds. The poet repeats the words who called 3 times in the first 4 lines for emphasis. यानी किसी चीज़ पे अगर हमको जोर दे के कुछ कहना हो तो हम उन चीज़ों को बार बार कहते हैं, उन्हीं शब्दों को बार बार हम दोहराते हैं। तो इसलिए कवि इसमें दोहराता है कि हु कॉल्ड, यानी ये शब्द किसने कहे। और हु कॉल्ड ने बर्ड्स को कंफ्यूज कर दिया। लगता है फुसफुसाते हुए जो ओपन स्पेसेस, जंगल में जो खुली जगह थी वो पहुँची और वापस आए। तो यानी जो ये कवि की कल्पना है केवल। The next paragraph, the leafy boughs on high hissed on the sun. The dark air carried my cry faintingly on. The leafy boughs, leafy यानी पत्तों वाले, boughs branches, डालियाँ यानी पत्ते वाली डालियाँ, with plenty of leaves on high ground, यानी कि बहुत ऊंचे। समझिए कि ये एक पहाड़, एक खुली जगह है और फिर थोड़ी सी ऊपर को जाती हूँ तो वो जो वहाँ पेड़ हैं और उनके जो लीफी बाउस हैं यानी पत्ते वाली डालियाँ हैं, ऑन हाई ग्राउंड और एज इफ लाइक पर्सन्स, वो उनको कवि कहते हैं, कल्पना करते हैं फिर से कि ये जो डालियाँ हैं, पत्ते वाली डालियाँ हैं, दे आर एज इफ लाइक पर्सन्स hissing making the sound towards the sun. आप ऐसा सोचिए कि ये जो पत्ते वाली डालियाँ हैं ऊपर की तरफ, सूरज की तरफ देख रही हैं और मानो इस तरह की आवाज़ कर रही हैं, जो कि हम अधिकतर केवल किसी व्यक्ति से एसोसिएट करेंगे, संबंध में लाएंगे उसको। द पोएट कल्पना करते हैं, कवि कल्पना करते हैं। आगे उसके बाद द डार्क एयर यानी अंधेरी हवा। अंधेरी हवा कहाँ कहाँ होगी? जो कि जो बहुत ज़्यादा छायादार वृक्ष होंगे उनके नीचे अंधेरी हवा होगी, या रात का समय हो तब अंधेरी हवा होगी। तो कहते डार्क एयर दैट इज़ ब्रीज अंडर द ग्रीनरी seems to take the poet's words, who called, faintingly low, slowly ahead. Faintingly low का मतलब अगर किसी को बेहोशी की हालत में जाने वाला हो कोई व्यक्ति, तो उसको सुध-बुध पूरी तरह भी नहीं होती है और पूरी तरह सोया भी नहीं होता। तो ये जो डार्क एयर के थ्रू जाती हुई कवि की आवाज़ है, हु कॉल्ड, बड़ी धीरे धीरे, स्लोली अहेड यानी धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही है। Eyes in the green, in the shade, in the motionless break, voices that said, that I said for mockery's sake. अब यहाँ क्या है? The poet here imagines that there are some people behind those trees, and those behind the trees are referred to by the words eyes in the green. आपको अगर कोई व्यक्ति की आप कल्पना करें जो कि डालियों के पीछे होगा तो आपको आँखें दिखाई देंगी अगर अंधेरा हो। तो कह रहे हैं कि eyes in the green and in the shade, it could be in the darkness of the night or under the shade of thick leaves. That is where he is seeing that. So he cannot actually see them.
उनको कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है. And the in the shade, eyes in the green, in the motionless break. Motionless यानी बिल्कुल still वातावरण है. Still यानी शांत वातावरण, एटमॉस्फेयर है, और उसमें एक ब्रेक दिखाई देता है. And there is a break cut with the echo. He's talking about the echo, यानी वो आवाज़ की गूंज की बात कर रहे हैं कवि. तो उनको लगता है कि एक सडनली एक ब्रेक हुआ, उस आवाज़ में ब्रेक हुआ. और वॉइसेस दैट सेड दैट आई सेड, और कवि की कल्पना है, असल में कोई आवाज़ नहीं आ रही है. तो पीछे की आवाज़ यानी कि जो व्यक्ति वहाँ पीछे हैं, वॉइसेस दैट आई सेड, कि मैंने कहा, फॉर मॉकरी से. मॉकरी का मतलब आपको चिढ़ाना या किसी को टीज़ करना, दैट इज़ मॉकरी. एंड फॉर मॉकरी से यानी मैं किसी को चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ, ऐसी कल्पना है. दीज वॉइसेस सीम टू कन्वे, पीछे से आवाज़ ऐसी लग रही है. एंड दे आर एज इफ सेइंग दैट द पोएट इज सेइंग टू मेक फन ऑफ अस, यानी हमको चिढ़ाने के लिए, मजाक करने के लिए. और द पोएट इज़ प्रेजेंट इन द वुड्स एट द मोमेंट, यानी कि जंगल जैसी जगह में कवि हैं वहाँ. 13 to 16. Who cares? I bawled through my tears. The wind fell low in the silence. Who cares? Who cares? Wailed to and fro. अब कहते कि who cares का मतलब किसको चिंता है इसकी. मॉकरी से, जो पिछली लाइन में कहा कि चिढ़ाने के लिए, मॉकरी से seems to have hurt the poet, यानी उनको बुरा लगा, खराब लगा. And he responds back. And how is he responding? He says, I bawled. Bawled means weeping loudly and also trying to yell at, चिल्लाने, through my tears. आँखों में से आंसू निकल रहे. ये सब कवि की कल्पना है. तो I bawled through my tear. Who cares? यानी मुझे कोई परवाह नहीं है. Who cares? I bawled through my tears and said, who cares? Suggesting that he is not affected by those unknown voices that echo his words. यानी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. When there is less breeze, it says the wind fell low. अब उससे पहले हवा थोड़ी तेज़ चल रही थी, अब हवा कम, fell low यानी कम हवा चल रही है. In the silence, और धीरे धीरे वातावरण शांत हो रहा है. एनवायरनमेंट इज स्टिल, शांत, स्टिल. हिज वर्ड्स, हु केयर्स यानी किसको चिंता है, आर एकोड बैक टू हिम इन अ क्राइंग कंप्लेनिंग मैनर. दिस वर्ड वेल्ड, टू एंड फ्रो. वेल्ड इज रोते हुए चिल्लाने की जो आवाज़ है वो. टू एंड फ्रो टूवर्ड्स एंड बैक. सो बैक एंड फोर्थ, it is just again the imagination of the poet. And he says, how, where, to and fro, that towards and from, back, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ. तो आपको एक सीधी सादी जो आप साइंस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, एको, उसमें यहाँ कवि ने कितनी अच्छी कल्पना करके आपको कोई एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिया है, ये दूसरी तरह से समझाने की कोशिश की है. So in this poem, the simple experience of an echo is the central idea. The poet has imagined mysterious unseen voices, यानी अनदेखी आवाज़ें. कहाँ? In the forest. He seems to be surprised when his words, who called, who cares, find their way back to him. He has looked at the natural situation of echo from a very different angle. This brings in an element of unreality, जो असल में नहीं है, खाली करीब सपने की तरह है. And words like glades, leafy boughs, sun, in the green, in the shade, dark air, the wind, they all indicate nature. And whispering glades hissed on the sun, dark air, motionless, bawled, wailed. All these words add to the mystery
of the echo poem that he is talking about. The qualities of whispering, hissing, mocking, wailing, which are normally connected with persons. आप व्यक्तियों के साथ इन elements को जोड़ते हैं. They are assigned to imaginary persons that are there behind. That is the poet's imagination. So, did you enjoy learning about the interesting take of echo from Sir Walter? I sure did. Thank you. Namaste.